Anji, football is back on the field at least, and quite a few good performances, quite a few weird performances, quite a few interesting performances, quite a few comical performances. The week one, the weekend one of football coming back literally had it all. हमने देखा सिटी ने कैसे ऑलमोस्ट एक रूथलेस स्टार्ट किया है. हमने देखा कि बार्सिलोना ने कैसे एक ऑलमोस्ट एक चैंपियंस की तरह, डिफेंडिंग चैंपियंस की तरह डिजर्वेडली सो स्टार्ट किया है उन लोगों ने. हमने देखा कि कैसे यूनाइटेड ने अपने परफॉर्मेंस से थोड़ा सा सरप्राइज तो किया, रिजल्ट से सरप्राइज नहीं किया, परफॉर्मेंस से सरप्राइज किया. एंड हमने देखा कि कैसे सनडरलैंड रैंडमली वापस आके एक एस्टैब्लिश्ड प्रीमियर लीग टीम को 3-0 पेल के चले गए. And we saw a lot. Welcome back to Top Corner. We are welcoming back football. We are welcoming back the weekends of stress and another 9 months of 11 people deciding our mental state. And that is what we are talking about. We're talking about the key talking points. We're talking about the big things that happened and the ones that we actually want to talk about. So let's go. सबसे पहले तो Sunderland मेरे ख्याल से welcoming back to the Premier League and in style. Yes. That was a good performance. Yes, That was a surprising. Okay, not surprisingly, but हाँ, we didn't expect this good a performance. To be exactly. fair. And adding to that, सुजय भाई, what the atmosphere क्या था सैंडरलैंड के जो ग्राउंड पे भाई. I have been watching Premier League for the last 5 or 6 years, but that atmosphere, क्योंकि बड़ा स्टेडियम नहीं है उनका इतना बड़ा भी, हाँ. but when I was watching that match में ऐसे लगा दिया था मैच, बट मैच और किसी को अगर देखना है तो हाइलाइट्स देख लेना. काउंटर लगा तो जो आवाजें हो रही जैसे ये लोग प्रीमियर लीग टाइटल जीत रहे हैं भाई साहब, ऐसी आवाज हो रही है फर्स्ट डे रे. तो दैट वाज आई थिंक द मेन इंस्टिगेटर इन ऑल दिस, क्योंकि 61 मिनट तक दोनों टीम्स वेर एक्चुअली 0-0 पे थे एंड वेस्ट हैम वेर एक्चुअली डोमिनेटिंग फॉर सम टाइम. उसके बाद जो एटमॉस्फेयर कॉट देम कि ग्राहम पॉटर की जो भी बोल सकते हैं हम, क्योंकि जैरेड बोवन का भी एक 2-3 अनलकी चांसेस मिस हुए थे. उसके बाद तो भाई जब पहला गोल लगा उसके बाद तो डबल हो गई जो आवाजें थी. एंड 3-0 आई वाज नॉट एक्सपेक्ट, क्योंकि वी ऑल नो जो टीम्स प्रमोट होके आती है देयर आर मेनी चांसेस, द मोस्ट जो स्टैटिस्टिकल है कि बहुत सारी टीम रेलीगेट हो जाती है, जो कि हमने देखा है. बट कमिंग टू प्रीमियर लीग, बीटिंग वेस्ट हैम 3-0 ऑन योर 8 years, आई थिंक सो 8 साल के बाद आ रहे हो. 3 साल 3-0 में सलमान खान जैसे एंट्री किया आप लोगों ने. नाइस नाइस नाइस. क्या बोलते हो, मजा आया सनडरलैंड को वापस देख के? इट्स बीन अ व्हाइल सिंस वी सॉ सनडरलैंड. नहीं शिवम? it's been a while. It's been a while. It's always good to see such clubs come back to the Premier League. And as Vaibhav pointed out, कि इतना atmosphere था, इसलिए था क्योंकि when famous clubs or good enough clubs, they make a comeback, their fans really get behind them. और वही हुआ. Yeah. सनडरलैंड फैंस ने एक्चुअली बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर बनाया. दे आर एक्साइटेड टू बी बैक इन द प्रीमियर लीग. फ्रॉम दिस, आई नो इट्स जस्ट द फर्स्ट मैच, फ्रॉम दिस परफॉर्मेंस आई थिंक इट विल बी एक्साइटिंग to watch Sunderland in the Premier League this season, because you can just feel that energy from the crowd, from the players. So great Very comeback. Welcome back to Premier League Sunderland. Very fair. अच्छा, surprisingly good performance from a team से चलते हैं एक और surprisingly good performance. We were expecting a good performance, but this was very good. Tottenham Hotspur. We go straight to our Spurs correspondent, Mr. Rex. क्या भाई मजा आया? रिचार्लिसन को R9 बना दिया आप लोगों ने मजाक में. और वो साला इतना ही बाइंग इनटू द हाइप ऑलरेडी, उसने पोस्ट कर दिया है. You before anyone says anything, you gotta love Richarlison, and you gotta love Richarlison in a World Cup year. Exactly. Almost World Cup year, so yeah, picking up. क्या है ना, वो कॉन्फिडेंस वाला प्लेयर है, उसको जितना कॉन्फिडेंस मिलेगा वो उस हिसाब से अच्छा परफॉर्म. थॉमस फ्रैंक का सबसे मतलब सबसे की पॉइंट क्या है उसके कोचिंग करियर का? एक है टैलेंट आइडेंटिफिकेशन, दूसरा है अप्रिशिएशन. ठीक है, वो प्लेयर की इतनी ग्रोथ ज्यादा कर लेता है ना. आप देखो ब्रायन एम्बुएमो भाई, वो कहाँ कर रहा था लीग 2 में, लीग डर का प्लेयर था वो, लीग 2 का प्लेयर था वो. उसने वो वहां से उठा के यूनाइटेड में अभी फाड़ रहा है वो. ठीक है, ऑली वाटकिंस, मतलब नाम तो भरे हुए है ना. तो वैसी वाली एक अच्छी चीज मुझे वही लगी कि भाई थॉमस फ्रैंक आया है ना, तो अगर कोई भी प्लेयर आ रहा है तो मुझे पता है ये जाके सीरियसली इंप्रूव ही करेगा इसके अंदर. ठीक है, तो एक चीज वो अच्छी लगी. बाकी टीम का तो मुझे पता है, देखो जो भी प्लेयर स्टार्ट कर रहे थे, हमने तो मिडफील्ड अपनी पूरी यंग मिडफील्ड खिलाई थी बॉल के साथ साथ आर्ची ग्रे, और अच्छा कंट्रोल रखा था हमने. मतलब लिटरली बर्ली तो मतलब सेंट्रल लाइन से तो खुल नहीं रहे थे हम.
जितना भी मतलब अटैक हो रहा था उनका भी सेट पीसेस चल रहा था, हमारे भी सेट पीसेस चल रहा था, सेट पीस रूटीन। तो यही चीज हो रही। लेकिन हाँ गोल्स अच्छे पड़े भाई, स्पेशली मोहम्मद कुदूस, क्या ही प्लेयर है भाई। मतलब आप सोचो कि भाई 55 मिलियन पाउंड का प्लेयर क्या ही मतलब आउटपुट हुआ है। हाँ उस मतलब लास्ट टू लास्ट सीजन 28 का जीए था, लेकिन लास्ट सीजन तो कुछ भी नहीं था उसका, 9 का जीए था बस, और इंजर्ड आधा टाइम रह रहा। लेकिन यार प्लेयर की क्वालिटी जो होती है ना वो दिख जाती है, वैसे फर्स्ट मैच में ही दिख गई। भाई टेक्निकलिटीज असाइड रेक्स भाई, सेकंड ही जस्ट टेलीपोर्ट। वो जो क्रीची को पास दिया ना, जो समचूस उसने फिनिश किया, वो वाला पास दे, वो वाला मतलब ड्रिबल देखना, क्या ही मतलब बॉडी फेंट क्या ही किया उसने, बस एक बॉडी फेंट दिया निकल गया वो आगे। मजा आ गया भाई। टेक्निकली असाइड रेक्स भाई, व्हाट वाज दैट सेकंड गोल बाय रिचार्लिसन? वो क्या गोल था? बंदा भाई पूरी टीम का उसमें बाय द वे apparently everybody touched the ball in the build up and that was good build up. Yes. हाँ बट भाई मैं वो ट्विटर पे देखा, बिकॉज आई वाज नॉट वाचिंग टॉटनहम गेम फॉर ऑब्वियस रीजंस, बट आई वाज लिटरली जब मैंने वो ट्विटर पे देखा, मैंने सीधा मैसेज किया रेक्स भाई व्हाट्सएप पे, भाई क्या गोल था ये। क्योंकि ऑन अ स्टार्टिंग डे ऑफ प्रीमियर लीग आप ऐसे स्टार्ट करते हो टू अ कैंपेन, that's interesting, that's exciting, that's football altogether. Very fair. And Tottenham are only about to get better because apparently SJ from Crystal Palace is almost done. मेरे ख्याल से 1-2 दिन में अनाउंस भी हो जाएगा if I'm not wrong, अगली गेम से पहले उनकी। And he's a beast of a player and that is a very good addition. Especially Maddison चला गया, as in almost all पूरा ही सीजन बाहर है वो, तो this guy adds a new dimension to their attack and the midfield as well. Good days ahead, I'm sure. Good days ahead. On Crystal Palace, just a small deviation before we go into anything else. जो उन्होंने चेल्सी के साथ मजाक किया है, मजा आया देख। That was worth watching that match. Crystal Palace were playing like they were the home team. Honestly, ऐसा लग रहा था Crystal Palace के ही घर पे खेल रहे हैं. And I'd just like to say, we'll talk about Chelsea later maybe. Crystal Palace, if they can keep, I know Eze is going now. If they are able to keep him and other players, और दो तीन निकलने वाले हैं यार, गेही भी निकलने वाला है और भी एक दो निकलने वाले हैं. But whatever they're being able to do so far, भाई, whatever they're being able to do so far is fine. Dude, नहीं तो they could have competed well for European places इस साल. They will eventually. They will find another set of players. The manager is very good. On Chelsea, I just want to say one thing and one thing only. We're not even talking about Chelsea today. I have a feeling जो उनका क्लब वर्ल्ड कप का थोड़ा सा इशू तो आएगा. They really ran deep and obviously won it. They didn't get enough time in the middle. Initial थोड़े से issues कल भी दिखे. That will be a bit of a challenge. We'll talk about it. We'll talk about Chelsea as things go on. अभी के लिए क्या ही बात कर लोगे यार, 0-0. It's not. I'm sure the fans and the players are disappointed. Everybody is, but I don't think they would also read too much into it. I'm sure they'll also be a case of कि हाँ यार ठीक है, let's just preserve energy and make sure that we're going into the middle of the season with fresher legs, and them having signed so many players will obviously help, है ना? So basically they're gonna sign more players. Exactly. अभी चावी सिमंस वगैरह हुए नहीं है. अभी चावी सिमंस वगैरह हुए नहीं है, तो there is more coming, I'm sure. एक्सक्यूज भी मिल गया उन्हें भाई. जावी सिमंस वगैरह का, वो जावी सिमंस का तो ऑलमोस्ट डन ही है, क्योंकि जिस वो होता है ना, कोई एक लड़की को आके पूछ ले, मैम कैन आई हेल्प यू, वो बोलती है आई हैव अ बॉयफ्रेंड. वैसे जावी सिमंस का भी हो चुका है. क्या हम हमको साइन कर सकते हैं? नहीं मैं चेल्सी के लिए रुकी हुई है. भाई फैब्रिजियो का कल ही आया है कि ये लिटरली जावी सिमंस का है. I love the analogy. I love the analogy. I love that. Weird as hell, but okay. Anyway, coming to United, I'm sure both United and Arsenal. The match, yes. But yeah, I'm sure you guys are disappointed by the result, but थोड़ा सा तो सिल्वर लाइनिंग दिखा होगा परफॉर्मेंस. एग्जैक्टली. मैंने ट्वीट भी किया था भाई कि this was one of the best performances by an United side in a while. क्योंकि आप देखो हमारी जो साइड थी विद लास्ट ईयर बोल दो, जब विद टेन हैग बोल दो, इतनी अटैकिंग और इतनी डोमिनेटिंग नहीं थी, टू बी फेयर. क्योंकि लास्ट मैंने जब ये साइड देखी थी, तब ओले का जब रोनाल्डो और उसके पहले वाला सीजन जिसमें वो सेकंड हुआ था, वो उस टाइम की बात मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि उस टाइम पे जाके वो यूनाइटेड की आइडियोलॉजी दिख रही थी कि विल प्ले लाइक डेविल्स. अभी जाके विद कुनिया एंड एम्बोएमो, इन हरामखोरों ने 6.4 की रेटिंग दी. किसको देख के दी है रेटिंग वो पता नहीं है, बट
Exactly. इन दोनों ने भाई literally we were unlucky in the final third, but to be fair, or if anybody has watched the match, we have two gems in our basket for a while. क्योंकि हम जब भी पैसे खर्चते थे, हम भंगार खरीदते थे. पहली चीज के लिए हमने जब खरीदा है अभी इन वाइल, हमने मर्सिडीज लग रही है. जो गाड़ी हमने खरीदी है अभी 2 गाड़ियां मर्सिडीज लग रही है. अनटिल अनलेस ये गाड़ी हमको क्या बोलते हो आपको वो सर्विस देना स्टार्ट करते. We have bought Mercedes right now with Benjamin Sesko. Sesko got 30 minutes only, so I am not judging him on that. But to be fair, it was a great match. अल्टा बाइंदर से थोड़ा हो गया क्या ही बोल सकते हैं. वैसी लक तो खराब चल ही रहा है हमारा. तो 1-0 was good enough for to be fair. Okay. I honestly on that. Yeah, हाँ, exciting था to watch United, and that hasn't been the case over the last 2 years. So that at least मैंने ये नहीं and that सुना is something the किसी यूनाइटेड फैन के मुंह से इतने टाइम में. हाँ कि like Exactly. मैं Again- वही बोल रहा हूँ भाई. it was exciting to watch the team. Again, it's the first match, and Arsenal weren't 100%. United weren't 100%. And if Arsenal were, maybe it would have been a slightly different match as well. But what we as United fans would have, what we liked from this match was it was exciting. It was good structured play that we could see what is happening, what they are thinking. Individual performances भी कुछ अच्छी थी. मैं भी again individual performances पे बहुत discuss नहीं करूंगा. टीम एक्साइटिंग थी. Amorim said कि हमारी टीम एक्साइटिंग होगी, जो नहीं थी कई सालों से. दैट इज समथिंग ही वांट्स, दैट इज समथिंग वी वांट एज वेल. हार जीत लगी रहेगी भैया, खेलते हुए देखने में तुम्हें मजा आना चाहिए. वो आया. Exactly. A lot to build, but some problems that I think everyone knows जो आनी थी और वो अभी दिख ही रही है. Midfield and keeper. So वही कह as रहा हूँ, the but too season early. progresses, we'll see. Too Exactly. early to be fair, but too we knew early. what we are the reasons to be. I want to talk about the refereeing issues, but we'll talk about it in tomorrow's video because उसको वो करने बैठेंगे तो फिर बाकी टीम की बात नहीं कर That's a whole Exactly. topic. पाएंगे. VAR, refereeing issues, and one thing I have a big problem with is the crowding of the goalkeeper, and every team is doing it. I'm not targeting Arsenal. I'm not targeting anybody. Every team is doing it. It needs to stop. It needs to stop. in my opinion. It's a topic that we'll discuss on. Arsenal are using it well since last 2 years. How the referees doing it? Wait. Different referees have different opinions about the crowding the goalkeeper. Exactly. They do. तो rules के साथ आप खेल सकते हो यहाँ पे, वो भी चीज है. वही मैं कह रहा हूँ. We'll talk about it in tomorrow's video, guys. So do tune in for that because we would like your opinions as well, because Yes. a rule and a law cannot be open to interpretation. It should be the same for everybody, and it should be same for everybody implementing it as well. The case in point, referees. आप referee के POV के हिसाब से नहीं चल सकते. आप रील नहीं बना रहे हो, आप फुटबॉल मैच चला रहे हो. तो at this point, that is something we will talk about tomorrow. But yeah, positive start. I know result-wise not a positive start for Manchester United, but I do think they are in for a better season for sure. अगर ऐसी performances they can continue. Going to the other side of Manchester City, they started off very strong. And one player I want to single out before I open it to Rex भाई, Tijani Reinders. भाई साहब क्या है वो? Yeah, again, I'd say, first match, we'll judge him more. But what I liked about City is they were patient in their whole play. They had like full concentration and they were patient. It's a good start, not just result-wise. It's a good start. They were switched on. Mindset se. That is what makes them dangerous. That is what's going to make them dangerous. Because Guardiola is switched on, and if he is, so are his players. That will make it tough. सारा उस पे आता है. वही. But Tijani Reinders भाई, please Tijani Reinders, कौन बोलेगा फटाफट? Tijani Reinders भाई, हमने पहले ही बोला है भाई. गुंडगान का मींस पूरा डाल दिया इन्होंने. क्या देखो रेंडर्स का आप देखो ना, मतलब आपने वो वाला गोल देखा ना जो उसने प्री असिस्ट किया था. वो 2 प्लेयर्स को बीट करता है. सबने सोचा कि हाँ भाई ये यहाँ से शॉट लेगा, क्योंकि वो प्लेयर है, वो गोल्स मारता है उस रीजन से. लेकिन उसने क्या किया, उसने बॉल बस लॉब कर दिया ऑस्कर वॉक के लिए. वहां से उसने असिस्ट निकाल लिया और हालैंड का फिनिश आ गया. तो इसलिए मैं बोल रहा था कि भाई हालैंड बहुत सारे गोल मारेगा, क्योंकि उसके पीछे इतने अच्छे प्लेयर है ना, उसको पास डालेंगे. भाई ये तो बीस्ट वाला निकालेगा इस बार सीजन. भाई 2 तो ऐसी मार दिए मजाक में. और एक सिटी में तो बोलते हैं कि भाई 50 गोल मारेगा वो. भाई वो होता है ना भाई यार, कोई लिटरली होता है ना, जो छोटे बेबीज होते हैं, उनको जब सेरेलैक खिलाया जाता है, उनकी मम्मियां कैसे नहीं बोलती, ले मुंह में ले.
ऐसे खा ले। वैसे अभी सिटी की जैसी I टीम है just- लिटरली। I just love it. I just love हालैंड को फीड कराने बेबी फीड कराने लगे भाई। भाई बेबी फीड करवा रहे हैं लिटरली एट दिस पॉइंट भाई। मॉन्स्टर बेबी है ये तो। Big But appetite yeah, this baby. that's what I'm going to change Vaibhav's name to something more apt. But yeah, please continue. That was a good performance, to be fair. That was a That was a good genuinely good performance. And by the way, हमने जब बोला था कि Manchester City can win, Pep Guardiola has never gone 2 seasons without winning the league. Without a title. Yeah. That's such a stat to have, man. For Guardiola himself. Yeah, एक बार हार सकता हूँ, 2 बार लगातार नहीं हारता मैं। वही. So that's what हम we किसी और इज्जत के लिए हंस रहे थे। हाँ, वैभव का नाम देख लो सारे लोग, एंड इफ यू गाइस एग्री प्लीज डू ड्रॉप अ लाइक. वैसे भी कासेमिरो भी कभी ट्रॉफी नहीं हारा था, बट टू बी फेयर हार ही गया। वो यूनाइटेड कर्स. बट अगेन coming back to City, that was a very strong performance. That was a statement start, to be fair. They are laying down the marker at this point, and there were no issues whatsoever सामने से. Wolves ने actually पहले 10-15 मिनट थोड़ा सा तंग किया था इन्हें, but once they settled into their rhythm, there was no chance of Wolves coming back into it. And yeah, that was a strong start. Speaking of starts, the first game of the Premier League season, Liverpool versus Bournemouth. That was a scary game almost for me, at least, for every other Liverpool fan. हमारे तो मजेदार लगा था भाई। हाँ भाई, खुल गए थे हम लोग. 2 गोल. एकिडिगे was a very good performer throughout the game, not just with the goal. He was good throughout the game. ऐसा लग रहा था बीच-बीच में कि कहीं-कहीं सेटलमेंट, अगेन वेरी न्यू टीम, a lot of new players. थोड़े से इश्यूज तो दिख रहे थे वहां पे, पर आई डोंट वांट टू रीड टू मच इनटू इट, बट थोड़ा सा डिफेंसिव इशू तो दिखा फिर से, जो मैंने बोला भी था सीजन के शुरू होने से जस्ट पहले कि भैया. एंड अगेन ग्रावेनबर्ग आएगा नेक्स्ट मैच में वापस, मे बी ही विल बी अ बेटर फिट इन द डिफेंसिव मिडफील्ड साइड ऑफ थिंग्स, बट अगर ऐसे रहा तो भाई कंसर्निंग है. मजा पूरे दिलाएंगे ये लोग, बट लीग जीतना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा ऐसे. विदाउट ए रजिस्ट्रा काम नहीं कर सकते. वो तो वही. लिटरली बोल ही दिया ना पोस्ट मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि नहीं हो सकता है. ग्रावेनबर्ग आएगा, क्योंकि मैं इसीलिए बोल रहा था कि ग्रावेनबर्ग का आपको चाहिए रिप्लेसमेंट, मतलब बैकअप तो कोई ना कोई चाहिए, क्योंकि एंडो तो रजिस्टर है नहीं. वो तो एंडो को राइट बैक खिलाता है. बट टू बी फेयर, व्हेन एंडो आया राइट बैक पे था, बट उसको 5 मिनट में वापस अंदर भेज दिया था मिडफील्ड में. एंड एक्चुअली लिवरपूल गेन्ड कंट्रोल ऑफ द गेम वंस एंडो वाज इन द मिडफील्ड. वापस जो कंट्रोल आया है, सो एंडो कैन एक्चुअली डू अ जॉब फॉर द टीम. Kiesa's goal was very well taken, to be fair. I was not expecting him to do this well. Today it's almost that we had forgotten about Chiesa. Almost everyone. मतलब तुम्हें ही याद होगा कि वो तुम्हारा प्लेयर था, हम genuinely भूल चुके थे. वो आया और मैं भी हिल रहा, अच्छा हाँ ये तो है, ये भी तो है. and he showed that. So fair. The goals by Semenyo were impeccable. Second goal was he had options. He had options both sides, but क्या confidence था उसने कहा नहीं. He took on 3-4 players in that moment and he said, "Nah, my goal." Bournemouth, यार. Shout out to Bournemouth. They've lost 4 of their starting 5 defenders backline के, and they've still rebuilt it. Goalkeeper. Along with their goalkeeper, Yeah. they've still rebuilt this. And they've still managed to do this on the first day of the league. They came very close. They actually came very close, and they managed to tie down Semenyo. Exactly. नहीं, just adding Semenyo का point उठाया तो just one more thing. भाई व्हील चेयर पे बंदे लिटरली रेसिस्ट स्लर्स दे रहे थे बीच में, which is very funny. Shameful, ironic, hypocritic, क्योंकि वो literally on the starting day of Premier League, 30 minutes into the match, you are happy. It was very much kind of फिर जब पता चला awkward लगा, जब फिर पता चला it was like nothing has changed at all. That जो kind black of matters, like that kind of spurred Semenyo on. Of course, it's distasteful beyond anything. Yeah. And as a Liverpool fan, I hope that guy is actually arrested, not just banned for life. And like stronger. And I know we'll speak about this topic more in some other video. But honestly, Premier League या कोई भी leagues ना, they've been talking about it, but impactful change नहीं दिखा. This coming from a Liverpool fan, there are so many black players in the team. Exactly. There are so many players who are not white, black, brown, whatever. आप उसमें we've not seen this from a Liverpool fan अभी तक. We've seen this from a lot of different fan bases, but Liverpool fan bases में अभी तक नहीं आया था ये. I have seen from Liverpool fan bases racist slurs. Racism, yes, from every fan base I've seen.
इंक्लूडिंग लिवरपूल। रीसेंट टाइम्स की बात कर रहा हूँ भाई, रीसेंट टाइम्स में ऐसा कुछ नहीं निकला था लिवरपूल से। नहीं, a couple of years, हाँ, but वही कह रहा हूँ, overall, रीसेंट yeah. टाइम्स में it has been better, it has been much better लिवरपूल के उसमें भी। There is a reason This was behind it. genuinely shame. वही we'll When talk we about speak it about all the this time. topic more, I'll we'll bring talk that about topic up. But yeah, that was genuinely There's a shameful. reason. But yeah, that was the Premier League talking points. एक दो चीजें about the La Liga as well. मैं फ्रेंच लीग की बात नहीं कर रहा हूँ। PSG जीत के अपना पहला मैच, क्या करूँ? Nantes. Vitinha scored But from that, so yeah, higher but in the Ballon d'Or side. coming to the La Liga, Barcelona made a start very apt for a defending champion. Like हाँ ठीक है भाई, हम लोग इस they were playing with a certain swagger to them almost. रफीनिया ने जो स्टार्ट किया, यमाल का इनफैक्ट इतना अच्छा गेम नहीं था, एंड में गोल मार दिया उसने, बट इतना अच्छा गेम था नहीं यमाल का, बट द रेस्ट ऑफ द टीम वाज वेरी गुड, वेरी क्लिनिकल। क्या बोलते हो भैया? लमीन का वैसा हो जाता है ना कि आउटपुट अगर ना दिखे तो परफॉर्मेंस थोड़ी बुरी दिखती है। हाँ, उसने मतलब बहुत सारे एज कंपेयर्ड टू द रेस्ट ऑफ द टीम ही वाज स्लाइटली Rest of the लेस team, इज व्हाट आई एम सेइंग। हाँ, वो वैसे तो पूरी टीम ही 50% में खेल रही थी, बेरिंग 2 और 3 प्लेयर्स, बैकलाइन के छोड़ दो तो दिख रहा था कि भाई फर्स्ट मैच है तो प्लेयर्स ज्यादा, ये हैंसी फ्लिक ने तो खुद बोल दिया कि इट्स सीम्स लाइक माय प्लेयर्स आर प्लेइंग एट 50 to 60% ऑफ देयर कैपेबिलिटी, सो उसमें तो बात करेगा वो, उसने तो बोल दिया कि हाँ मैं ड्रेसिंग रूम में जाके बात करूंगा इस पे। तो वो दिखा ना, इशू दिखा कि आप ना जब उनको 2 रेड कार्ड मिल गए, फिर आपके प्लेयर्स पूरा मतलब सेटल डाउन करके कि हाँ पहला मैच है, जीत रहे हैं, 2 प्लेयर्स डाउन हो गए, कहाँ हारेंगे यहाँ से, तो इसलिए पूरी इंटेंसिटी खत्म हो गई। उसके बाद पूरा बोरिंग हो गया, जितना भी मतलब बला रहा था, थोड़ा प्लेयर लमीन की तरफ से दिख रहा था। लमीन ने मतलब वो हो जाता ना तो पर्सनल ग्लोरी के लिए कभी-कभी चला जाता। हाँ, you know that if you are the best, one of the best player in the world, that you have to be selfish sometime। तो वो दिखा हमें, लास्ट में गोल मार दिया उसने वैसा वाला करके। लेकिन यार एक दो अच्छे असिस्ट भी निकाले, जो रफीनिया को जो बॉल निकाला था उससे पहले जो ड्रिबल पास किया था मोइका को, मतलब मोइका जो उनका मयोका का मतलब लेफ्ट बैक है हाँ, ही इज वन ऑफ द मोस्ट सॉट आफ्टर लेफ्ट बैक इन द ला लीगा, ठीक है। उसका भूत बना दिया था उसने, लगभग 2-3 बार ड्रिबल पास करके चला गया था उसको, तो वो वाला चीजें थी। ठीक है, अच्छा परफॉर्मेंस था। 3-0 जीत गए हम, 3 पॉइंट चाहिए थे, और मयोका वाला मैच बहुत ही डिफिकल्ट होता है हमेशा, फिजिकलिटी मतलब कुछ भाई आपने देखा ना जो टैकल पड़ा उसको जॉन वार से, वो पूरा यहाँ पे लगा है भाई, यहाँ पे तो सोच लो कैसा फुटबॉल कर रहा है। I think performance was fine by Barcelona. Result was great. Performance was fine. Helped out by the fact दो red cards हुए. Also helped out by the fact second goal was very weird. वो गोल था नहीं था, वो बंदा लेटा हुआ है, just in case no one saw it, बंदा लेटा हुआ है on pitch, and I think he had whistled. Like I am not entirely sure, but the referee had his whistle in the mouth and he was whistling. So yeah, जो भी बोलो, that जो भी बोलो, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड फॉर रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, अपेरेंटली जिस टीम ने एक दिन पहले अपने सारे प्लेयर्स को मींस रजिस्टर किया है कष्ट मष्ट से, उस प्लेयर ने रेफरी को पैसा देके सब ये चीज करवा दी है फ्रॉम अ सर्टेन फैन बेस। आई एम नॉट नेमिंग ऑफ। बहुत ही खराब है भाई, बहुत ही सबके अगेंस्ट होता है। ला लीगा की बात करेंगे, we'll do a video about La Liga as well and how they are basically sabotaging their own league, but moving on from Barcelona to the one team that we thought will be slightly a challenger for this season, they made a bad start. I'm not reading into it too much, honestly speaking, we'll not even talk about it too much, but Atletico didn't have a very ideal start, to be fair. 2-1 हारे वो लोग एस्पेनियोल से। Dude, many new players मजाक उड़ा रहे हैं कि इतना खर्चा किया। Exactly. I think it was expected कि starting struggles आएंगे, and for me Atletico will be of course, अभी of course एक मैच पे नहीं जज करेंगे, but top 3 as usual, but I don't feel they'll compete very well for the title because many new players and different player profiles. तो स्टार्टिंग से बोला था कि ये 5 स्टार्टिंग 11 के प्लेयर ये खिला रहे हैं नए, लास्ट मैच में भी 5 स्टार्टिंग 11 के नए प्लेयर खेल रहे, तो इनको अगर ये सिस्टम में फिट करने में टाइम लग गया ना, तो उसी में ही सारा चला जाएगा, क्योंकि ला लीगा होती है वही, आप 2-3 मैचेस अगर कर गए, स्लिप अप कर गए, खत्म, फिर टाइटल खत्म।
देखते हैं. I do think Simeone, you can't put it past him to actually get नहीं players नहीं, settled in. And ऐसा भी वो नहीं था मैजिक कि करने में they were टाइम लगता है. completely lost, है ना? नहीं ऐसा भी नहीं था उस परफॉर्मेंस में. was Again, it is a game of fine It was margins fine. at times. So I have a feeling Alvarez they'll come scored back. a free kick. I am hoping we get to see more and more of him. He's a Exactly. star in the making, so आएगा. excited for him. I think that was it. I think those were the big things. रियल मैड्रिड की इसलिए बात नहीं करी क्योंकि उनका मैच नहीं हुआ अभी तक. कोई आना नहीं चाहिए मेरे पास. ठीक है? आगे तो भाई Everyone. मजे लेंगे तुम्हारे, जो भी बोल. आगे तो मजे लेंगे. भाई ये At the वीडियो time of निकलने के recording, बाद मैच होगा, आपको at पता the है? time कल of रात को हो recording जाएगा. this, वही मैं कह रहा हूँ. At the time of recording this, match नहीं हुआ अब. ठीक है? बाकी Arsenal, good job starting with a win over your bitter rivals. That was good, I guess. I don't know. I didn't like the performance as much from Arsenal, but No, it they eked out was a win. They eked out a win. clearly it was like 50%, 60% of what? Again, Exactly. Arsenal डिफेंस तो अच्छा है ही पिछले 2-3 सालों से, 2 सालों से तो काफी अच्छा. अटैक में ही थोड़ा सा था. दे विल पिक अप, बट ऐसे ही मैचेस जीतने पड़ते हैं स्टार्टिंग में, तो आर्सेनल तभी compete कर पाएगी अगर ऐसे मैचेस निकालेगी. And And Arsenal which have they did. Arsenal have maintained their record पिछले 2 साल से नहीं हारे वो बिग सिक्स में. हाँ, कम उनको ही हारे हैं. They haven't lost a lot of नहीं हारे. matches. Arteta draw has हो रहा है. not lost against United. Like 2-3 मैचेस हारे overall. Rest he's always got a result. So बट लेट्स सी. आप लोग के हिसाब से और क्या थे मेजर चीजें बात करने वाली? नीचे कमेंट्स में बताना जरूर. न्यूकासल का ड्रॉ हुआ था, बट अगेन उनका जो बेचारों का चल रहा है अलग ही. आई डोंट इवन वांट टू टॉक अबाउट. वो बड़ी चीज है But ज्यादा. Not their result. we'll talk about Newcastle in a video this week. But yeah, do let us know your major things that you noticed. We will talk about refereeing in tomorrow's video. That was really weird because नया सीजन आ गया, साले ये वहीं के वहीं है. इनका कुछ नहीं बदलना. मेरे ख्याल से True. रेफरीज का भी ट्रांसफर विंडो होना चाहिए. मेरे ख्याल Not a bad suggestion. है ना? I would suggest Crystal John to referee at Premier League. To be those who I get tell it, you what, get it. Fabrizio Let's- Romano will love your suggestion. He will love your suggestion. है ना? Fabrizio Romano will love your suggestion. Here we go. Here we go, Here we guys. go for Here we go. referee. चलो, on that note, thank you guys for joining in. वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक का बटन दबाते हुए जाना है जरूर से. एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, मजा आने वाला है. नेक्स्ट वीक से लाइव स्ट्रीम शुरू हो जाएंगे, तो अगले वीक से पहले अगर 200 पहुंचा दिया आप लोगों ने, मजे आ जाएंगे, मजे बहुत ज्यादा. ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय. मिलते हैं आपसे अगले वीडियो.